So hello everyone. Hello. Okay. So okay. So before we begin, let's do a quick check that if you can hear me clearly, please type yes in the chat box. I'm looking over the chat section now. Yeah. Okay. Okay. I'm getting some messages. Just wait for a moment. I will be letting you know about that. Right? Okay. Okay. Sharnu. Hello, sir. Hello, Sharnu. Hello, Ria. Okay. Okay. Very good evening. Very good evening. Very good evening, Himanshu. Khalid, very good evening. Okay. Okay, I'm audible. It's clear from your end as well, right? That's great. So, welcome to Honeywell Future Skill Edge program. And basically, I'm really very excited that you all have already joined the session. And I hope that you all are doing well and ready for an engaging learning experience, right? So, how many of you are ready for that? Just, I'm looking over the chat section. Hello, Sinchan. Okay, Shanu says yes, ready. Ankita says yes, ready, sir. Anand says ready, sir. That's great. And that's the energy what actually I want, right? So now just tell me that how you all are feeling today. Just type in a one word. It could be excited, curious, relaxed, or maybe sleepy even, right? So just I'm looking over the chat for your answers that how you all are feeling today. Khalid says, ready, sir. Ankita says, sleepy. Oh, okay, Ankita will be doing some interesting things, right? Yes, sir. Himanshu says, I'm ready. Ria says, I'm excited. Always good to learn under your guidance, sir. That's great, Khalid. Purnima says, good, sir. That's totally great, right? Shakshi says, curious. Okay, obviously. That's what I was expecting from you all, right? So I can have a look that few of you are excited, some of you are curious, and some of are still warming up themselves for the session, right? That's completely fine. So by the end of the session, I'm sure that everyone will be a lot more curious about AI, right? So before we jump into the main topic, let's quickly go through with some of the few, or we can say some of the session hygiene rules so that session runs smoothly for everyone, right? So first is please do not, okay, just let me in everyone, right? That. So first is please do not record the session or take the screenshot because the content shared here is meant only for learning during the session. So kindly avoid recording and capturing the screen, although you will be getting all the recordings over the YouTube as well, right? Second, please participate actively since this is going to be a virtual session and most of the interaction will be happening throughout the chats, right? So your participation is very much important in that scenario. So whenever I will be asking you the question, feel free to respond in the chat and don't worry about giving the perfect answers because no one is perfect over here, right? And the idea is to just only about thinking and engaging, right? So the third one is use only the chats for the session related stuff. Either it can be the questions, polls, or the answers, whatever it is going to be, right? The fourth one, please keep your mic muted, although you cannot unmute yourself. But if you are allowed to speak at that time unnecessarily, don't open your mic, right? And the one small suggestion from my side that keep a notebook and a pen nearby because today we are going to gain some of the, or we can say a lot of the exciting things that will help you out in your future stuff and your interviews as well, right? Okay. So going ahead, okay, I can see some of the messages. I am fine, sir. Aman says, Sakshi says, ready, sir. Okay, that's totally great, right? Okay, let's move ahead. Okay. So now coming towards the recap. So already, all right. So before we move ahead, let's do a quick recap, right? What we have covered in our previous session and what we are going to cover in our today's session. So firstly, we'll be looking over the recap, right? Of where we'll be getting the key ideas that what we are going to discuss, what we have
discussed earlier in the last session, you all have taken the last session was taken by Anjali ma'am, right? So what you have learned in that, I will be asking you about today itself. So just to refresh our understanding, right? Then we'll be moving to the some of the more engaging with, we can say, live demos. Small quizzes are also there for you this time, and some of the question answers are also there. So you will be also getting a chance to interact through the chats and test your understanding that how you all are till yet via machine learning, so that we can be ready for the deep learning as well, right? And after that we'll be starting with our one of the interesting topic that is called to be your introduction to deep learning, right? And which is one of the most exciting areas within AI today, and also we'll be exploring how AI can see the images and even create a new images, or we can say the contents, which is something that you might already have been experiencing in many apps as well. We have seen via ChatGPT apps or the tools, we can say ChatGPT, DALI, Sora, many more are there related to that, right? And finally, we'll understand that how neural network think in a simplified way. So you can see that what actually happens behind the scene in a modern AI system as well, right? So this is what we are going to do today. So how many of you already know about these things, about deep learning, we can say? How many of you know about? I'm looking over the chats. Okay, let me admit all. Yeah. Okay. Stephen says yes, sir. He knows about that. Ankita says me. Okay. Okay. Just hold on a moment, please. Okay. So, Team CSR box, could you please make me the co-host? You already are. Yeah, you are co-host, right? Okay. So, Sakshi says, don't know about deep learning, sir. Okay, no worries. We'll be letting you know about that thing, that how we can do that, how we can proceed with that, right? So, moving ahead with the rest of the things. Yeah, Aman, I can see that you have raised your hand. If you have something, you can drop your message in the chat box itself, or else you can down your hands, right? That's great. Okay. Okay, so let's begin. So here is a QR code in front of your screen. Please scan the QR code, mark your attendance, and let me know that how you are comfortable with deep learning, so we can customize our classes according to that or the session, right? No worries, Aman, it's fine. So once you are done with this, please let me know by dropping a done message in the chat box. I'm looking over there. So once you are done, please drop done messages over the chat box so that we will be on the same page, right? Sir, following link is more convenient than the QR code. But here you have to go with the QR code only. Okay, Lakshita says done, Anand says done, dot 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 says done. Okay. Sakshi says done. Okay. Sanam Sanmayra says done. Sakshi says done. Okay. Okay, so I can have a look that most of you are done with this thing, right? So let's begin with the actual topics. Okay.
So just have a look. So let's recall that what we have learned in the previous session. Just have a look over here. So let's quickly do a short recap that what we have explored in the previous session. So we have started with stress. Before I will let you know that what we have covered, just I want to ask from your end that what you guys have covered in your previous session. Okay, I can have a lot of messages related to dancer, dancer, dancer. Okay, that's totally great. Just tell me that what you have covered in the last session. Okay, I will remove this slide. Now, now I can look over now I am looking over the chats. Just give me a small a message in that which includes everything which you all have covered in your previous session. Okay. Machine learning. Arey, what in machine learning, Ankita? I know that you have covered the machine learning, but what? What were the topics in that specific? Okay, I have got one more message. That is from Anand. Supervised machine learning, types, and algorithms. Okay, what more we have covered? Please let me know accordingly. Okay, okay. Okay, Himanshu says AI pattern. Sakshi says supervised machine learning and their types, algorithm types, decision tree. Okay. One of you is saying random forest. Okay. Okay. So now let's have a look at what we have actually covered in that, right? So we started with the introduction to machine learning and understood that machines can learn the patterns from data inside of being programmed with every single rule specifically, right? फिर हमने देखा कि different different types of learning like supervised learning, machine unsupervised machine learning and the reinforcement learning और समझा बेसिकली कि मशीन डिफरेंट वे में कैसे लर्न कर सकती है और कैसे लर्न करती है और डिपेंडिंग ऑन विच ऑन द टाइप्स ऑफ डेटा अवेलेबल कि कौन कौन से तरीके का डेटा अवेलेबल है जिनके ऊपर वो टोटली डिपेंड करती है राइट. After that, we focused on supervised machine learning and we have learned about two important elements that were feature and the labels, right? So features are your, we can say the inputs which we usually give to the models, and we can say the labels are the correct answers that help the model to learn the patterns, right? Then we looked into a few of the algorithms. So we can say important algorithms like linear regression, logistic regression. We understood about the basics of KNN, that is K nearest neighbor, right? And we also understood that how they help us in making the decisions or the predictions, right? And उसके बाद हमने देखा about decision tree and random forest, इनके fundamentals explore करे, that how it usually works, how it can be created, right? And we saw that how decision tree breaks a problem into simple step by step questions, right? Just like a flow chart, कैसे वो create करता जाता है एक एक चीजों को, right? फिर one of the most interesting part we can say that was the live demos which we have visualized in the last class. So we were where we visualized a decision tree and even used it for discover the personality traits, right? Based on the answers which we have given there, right? And not just only that, you guys have also explored about you all have also gone with the hands-on experience where you build the decision tree and the random forest models. But the main thing was that was without writing any single line of a code, right? And lastly, you all discussed about the real world applications, right? That how it is helping you all in the terms of different scenarios, we can say, right? So that was the journey in the last class, right? And now, before we move into the next topic, let's make it little fun with some quick questions and small challenges to see that how you all remember with the stuffs, right? So I will be showing you some questions and you have to drop your answers in the chat box itself, right? Okay, just allow me for a moment, everyone.
Okay. Done, Anjali. You can have a look. Aman says, this is my project, sir. How's it? Please tell me. At last, I will check it, right? Done. Okay. So now moving ahead. So the first question comes over here. That is, what type of problem is this? Predicting how many minutes a user will watch a video. It is going to be a regression problem or classification problem. Just I am looking over the chat box, right? Who is going to tell me the first? Okay, I've got the answer from Anand. He's saying about classification. What about others? Where are you all? Okay, I got another answer that is from Khalid. It's about regression, sir. Okay, you all are making it interesting. Chira says regression, sir. Okay, okay. Aman says classification, sir. Two votes for classification, two votes for regression. Sakshi says regression. Okay. Sami says regression. Ankita says regression. Okay, I'm getting more votes for the regression itself, right? Stephen says A. Nazma says regression again. Okay. Himanshu says regression. Okay, I'm getting multiple answers. Purnima says regression, right? Okay, let's have a look over the answer. Yes, definitely it is the regression one. So you all are right. And those who have selected the classification, just be clear on your terms because it was a regression problem, right? It was not a classification problem. Let's move to our next question. That is, yeah, it's a quick recall that if k is equals to 3, the KNN model will make prediction based on 3 nearest data points or 3 random data points. Which one you will select? A or B? Okay. Khalid says nearest data points. Anand says 3 nearest data points. Okay. Manshu says B, 3 random data points. Okay. Manshu says 3 random data point. Okay. Stephen says 3 nearest data points. Yogita says A, 3 nearest data points. Okay, Yogita. Najma says again A. Sneha says 3 nearest data points. Manali says B. Okay, Manali, 3 random data points, right? According to you. Sami says A. Puneet says A. Okay. Sakshi says 3 nearest data point. Okay, again A answer. 3 nearest data points. Saloni says A. Okay. Okay, I have got multiple A answers, right? Okay, that's interesting. Okay, okay. A. Everyone is saying A. Yes, you all are right. 3 nearest data point because ये हमारा सिंपल सा रूल था इसका that whenever you will be moving with the this k nearest neighbor तो उसका जो भी ग्राफ बनता है जो भी पॉइंट्स होते हैं अगर कोई भी नया डेटा पॉइंट लाई करता है it always look for the nearest values for that, right? Yes, let's move ahead. Which model is talking? I don't trust just one opinion. I ask multiple experts and take majority votes. Who am I? Decision tree, random forest, or logistic regression? This can be confusing for you all. Okay, let's have a look at how many of you are giving the answers. Okay, Khalid says random forest. Chira says random forest. Okay, okay. Now, Puneet says it's going to be random forest. Shami says decision tree. Saloni says random forest. Sadaf says decision tree. Okay. Shranu says B. B is your random forest. Okay. Sakshi says B. Manali says B. Okay, I'm getting lots of the answers related to the random forest. Karthik says B. Okay. Yogita says B. Stephen says B. Okay. Anand says B. Okay, that's totally great, huh? You all are saying B. Purnima is also saying random forest. Yes, you all are correct. It's none other than random forest because it used to ask from the multiple decision trees about the answers using the voting system, right?
Okay, let's move ahead. Okay, it's going to be fill in the blanks. Decision tree is best when dash is important. Speed, explanation, randomness, or GPU power. What do you think about this? This one. Okay. Puneet says speed. Okay. Sadaf says cry emoji. Okay. Okay, Sadaf. Khalid says explanation and speed. One can be there, not two. Okay. Najma says B. Explanation. Okay. Yogita says explanation. Explanation. Then Stephen says explanation. Anand says randomness. Purnima says B. That is again explanation. Ankita says B. Okay. So most of you all are saying about that it is B, right? Again, coming to that, Rupa says B. Okay. Okay, most of you are saying B, B, B. Let's have a look. Yes, it was. You all are right. It was explanation, right? Let's move ahead. Now, just you have to spot the algorithm. This looks like what? There is a scenario that school rule. If marks are greater than 90%, then they will be getting the scholarship. If marks are between 60 to 90, then it will be a regular. If marks is less than 60, then extra class is needed for them. So this logic looks like straight line equation, decision tree, randomness, yeah, or it is looking like a logistic regression. What do you feel about this? Okay, I'm looking over the answers. Sadaf says B, decision tree. Okay, Sadaf. Again with cry emoji. Okay. Stephen says B. Okay. Yogita says B. Najma says B. Karthik says B. Sayed says B. Everyone says B, saying B. Decision tree, decision tree, decision tree. Saloni is also saying B, B. Okay, Ankita is saying decision tree. Sakshi is saying B. Okay, Purnima is saying B. Okay, everyone is saying B only. Okay, let's reveal the answer. Yes, you all are right. It was decision tree, right? Okay, let's move ahead. Okay, now it's going to be very much interesting, right? It's time to wake up your brains, AI brains, we can say, because we have learned the similar AI concepts, right? And now let's see that if you can decode them under the pressure or not. So the letter will be mixed. You have to rearrange them and shout the correct word into the chat box. You will be getting 10 seconds per word for guessing that, right? So you don't have to think too much. Trust your ML instinct and you can reply in the chat box, right? So are you guys all ready for this thing or not? Just I'm looking over the chats. You all are ready? Okay, ready, sir? Ready, sir? Yes, sir, ready. Sami says yes. Okay, yes, 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 ready, ready. Okay. Okay, let's start with that, right? Punit says, ready, sir. Khalid, yes, sir. Purnima, yes. Okay, Sakshi says yes. Okay, I'm getting lots of yes in my names, right? Okay, so let's start with that. So the first thing comes over here. That is going to be boom in your screen right now. Just guess me the answers, what it is. Okay, I'm looking over the chat box now. Okay, I've got two answers. Akshat, root. Shira says root. Sadap says root. Shanika says root. Anand says root. Ankita says root. Everyone is saying root only, right? Yes, you got it correct. It's going to be your root, right? You all are correct for this thing. Okay, let's move ahead for the next round. That was this. Just guess the answers, what it is. Okay, I'm looking over the answers. Okay, Chira got the answer. Okay, so Sadab got the answer. Nathan got the answer.
Akshat got the answers. Bhumika got the answer. You all are saying only one word. That is algorithm. Right? So you all were right. You can have a look over the answer as well. Now the question again comes over here. It's the round three. What it is? It can be difficult for you all or not. Okay. 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 Sadab guessed the right answer. Akshat has also guessed the right answer. Deep has also guessed the right answer. Bhumika also right. Sakshi, right. Anand, right, sir. What's going on here? You are late, Realme. Just you have to decode the words. Prachi says model. Okay. Okay, everyone is saying only model. Right. It's yes, you all are right again. Correct. So coming towards the round four, just start guessing your answers. Let's see how many of you are how many of you have corrected guess. Corrected right, sorry. Mm, okay. Okay. Okay, Anand, you got right. Fiza model. Okay, Fiza. Okay, Akshata, Purnima, Indushri. Okay, Shira. Right answer. Okay. Okay, almost of you, every one of you are giving me the right answer. Yes, that is none other than regression, right? You can have a look at the answer as well. Okay, so let's move to the next round, which is just guess your answers over here. Okay, I'm looking over the chat. Nazma says, okay, okay. Everyone is writing only one answer. That's totally great. Okay, okay. Okay, Manali. Okay, Sami. Shanu. Okay, so you all knows about this thing, right? That is not none other than data, right? So coming towards the last one, it's the last round. Just guess it fast, everyone. Okay, I'm looking over the answers over the chat box. Sorry. Okay, okay. Sakshi says, not the errors, Sakshi. Okay, Shami, you are right. नज़्मा थोड़ा सा गलत है बस almost you were correct but it's not completely correct. Okay, Puneet says transformed. Okay, Puneet. Okay. Chira, you are right. Purnima, you are right. Great. Fiza, you are also right. Sadap, you are saying transformers. Okay. Khalid, you are right. Okay, Ankita, you are right. Saloni, transformer again. Karthik, okay. Karthik, you are right. Okay, I'm revealing the answer. That is, now have you got that? It is none other than random forest. Many of you were writing Transformers, movies, Chitti the robot, whatever it is going to be. So the answer was, which was guessed by most of the candidates in alongside yours as well. Manali has also guessed the right answer. That was random forest. Yes, Yogita. It was what you have written. Recognize transformer. Okay.
So let's move ahead, right? So before we move, right, all right. So we saw that decision tree are quite smart, right? They make decision step by step, just like answering a question of series. For example, um, we can say that is income greater than a certain value, right? Or we can say has the customer paid previous loan on time or not? Or we can say is the credit card credit score above a certain number or not? Right? For everything we have a different scenarios. But on these rules, the trees moves from one branch to another. And finally, it reaches a decision basically. So, but here is something interesting that for a decision tree to work well, someone usually need to help in defining the logic for that, right? Someone has to be there to guide the feature selection, help in the structure logic, right? Structure the logic, or we can say ensure the rules as well. That makes sense, obviously, right? But in simple words, the machine is following a structured rule system. इन्हीं को जो अभी तक हमने पढ़ा मशीन लर्निंग के अंदर, इन्हीं सबको हम अभी तक बोलते थे ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग्स, राइट? यानी कि जो हमारा रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग्स वी यूज टू से देम, राइट? तो यहाँ पर भी एक लाइक एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इफ यू डोंट वांट टू मैन्युअली डिफाइन ऑल दीज रूल्स? What if a machine could look at the data and discover the patterns on its own? हमको उसको कोई भी इंस्ट्रक्शन देने का नीड ही नहीं है, बस उसको हम डेटा दे रहे हैं, वो खुद से ही इमेजिन कर रहा है कि अच्छा यस दिस पैटर्न वी कैन क्रिएट, दिस पैटर्न वी कैन क्रिएट, राइट? It, you can say that imagine like instead of telling the system what to check first, then what to check second, third, we rest of the things, right? So the machine itself figures out that which pattern matters the most, right? What do you think, which was the better one, फर्स्ट वन और द सेकंड वन? कौन सा बेटर है ज्यादा? जहां पे मशीन, अभी तक मशीन को हम बता रहे थे कि कैसे फाइंड आउट करना है पैटर्न, या फिर सेकंड जहां पे हमें ये पता चल रहा है, हमें यहाँ पे सिर्फ डेटा दे रहे हैं और मशीन इज लेटिंग अस नो दैट विच पैटर्न्स वी कैन मूव विद? ओके, पुनीत इज सेइंग सेकंड वन. यस, ऑब्वियसली second one, right? Yeah, I'm getting lots of the answers for this thing. Yeah. Okay. Yes, yes. Obviously second one, right? Yes, Ankita, you are right. Yeah, obviously second one. जहाँ पे हमको खुद से पता चल जाएगा, मशीन हमको ऑटोमेटिकली निकाल करके दे देगी. And this idea, we can say, where machines can automatically discovering the patterns, take us to the next big step in AI. And that is where deep learning begins with, right? Okay. So far, many of the models were explored, we can say, that all were rule and structured on logic, right? They all based on the rules, or we can say the structured logic itself, right? But now we are entering into a different way of thinking, right? So welcome everyone to deep learning, where where we'll be moving from rule based thinking to brain inspired learning, right? So instead of manually defining the rules, we'll be designing systems that are inspired by the how human brain process information. It's works on that specifically. तो मशीन को डायरेक्टली रूल्स नहीं दिए जाते हैं यहाँ पे, राइट? इंस्टेड ऑफ दैट वी बिल्ड द नेटवर्क्स एंड दैट लर्न पैटर्न बाय देमसेल्फ, right? When even they see enough data as well. So this is a technology behind many modern AI systems, like image recognition is there, voice assistant is there, we can say, or we can say recommendation engines are there, and even that AI that creates images or text, they all works with the deep learning part itself. But before we understand the technical side, let's think something very simple, right? Just have a look. Let me ask you a question, that how does a 3 years old child
learn that what is a dog, or we can say that how a dog look like a dog. Just tell me that, does child read the definition? Just drop your answers in the chat box. I'm looking over that. No. Okay. Ankita says no. Okay. Okay. Himanshu says Narmada. Where it is coming? Lakshita has spammed. Okay. Shanu says no. Okay. Purnima says no. And patterns, design. Okay, Mohammed. Fiza says random forest. Raksha says no. Purnima says no. Okay. Sneha says, when parent tell to us that, or show us telling it is a dog. Okay, Sneha. Okay. Puneet says, when they repeatedly listen about this thing. Okay. Shanika says second. Stephen says yes. Anand says after one bites him. Okay. By just observing others saying it is a dog. Okay. So see, we used to extract some of the features. For example, dogs are having four legs, right? They are the four-legged mammals, we can say, belonging to their species, right? So it based on that. ऐसा तो नहीं है ना कि भाई वो चार टांगों वाले मैमल्स है, अपनी स्पीशीज को फॉलो करेंगे. इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? सो हाउ डज दैट स्पेसिफिक चाइल्ड लर्न्स? So child learns by seeing multiple examples. Parent points them and say that is a dog. So the child see different dogs, big dog, small dog, brown dog, white dog, black dog. So they slowly the brain start recognizing a pattern that yes, it is a dog. It is having a conical ear. So now when the child see a new dog in the park, the child used to say that yes, he is a dog. राइट. तो इस यहाँ पे कोई रूल बुक तो नहीं लगाई ना हमने. यहाँ पे कोई भी हमने रूल फिट नहीं करा उस बच्चे के दिमाग में कि अगर आपको पहले देखना है दैट ही इज ही हैविंग फोर लेग्स और व्हाट इट इज गोइंग टू बी, राइट. ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं करा. सो कोई भी फिक्स्ड चेकलिस्ट नहीं है, वी कैन से. So thus brain simply learns the pattern from seeing or observing many examples, right? And this is and this exact idea, we can say, that is totally inspired by that totally inspired a bunch of powerful AI, we can say, and that is none other than deep learning itself, right? So now let's think about something very simple, right? That why traditional programming fails over here. So this is a very important thing. So for many years, computers were programmed manually, we can say on manual rules, right? So programmer used to write instructions like if this happen then we have to do this thing, or we can say if this happens, if that happens, so we have to do that things, right? So accordingly they have to apply the conditions, or we can say they used to write the manual rules that you have to follow this specific approach, or you have to follow move with these types of rules, right? So these types of approach works very well, but for well-defined problems only, right? For example, calculating the taxes, we can say sorting the numbers, or we can say processing the bank transactions. But now, let me ask you something, that what will happen when the real world became too complex, right? Think of the situation like recognizing the faces, detecting the pedestrians on the road, we can say understanding the speech, right? In different languages, maybe identifying the objects in the images. So can we write thousand number, or we can say the millions of if or then, or we can say the conditions? Can we write the millions of condition, or we can say millions of rules for every possible situation? Just let me know about this thing. Yes or no, just type your answers in the chat box. I'm looking that. Okay, Manshu says no, sir. Sakshi says no. Lakshita says sound by its sounds. Okay, no, sir. Okay, Nazma says no. Okay. Shadab says
He only fear by watching body shape and structure of dog. Yes, obviously. Anand says, no, sir. Okay. Says sound back patterns. Yes. Okay. Kavya says no. Shrenu says no. Yeah. Okay. Yogita says no. Obviously not, right? And the real world scenarios have countless variations as well, right? A dog can look different in every single image. Lightning can be changed, angle can be changed, backgrounds can be changed, right? So as complexity increases, manual coding, or we can say manually coding every rule becomes impossible. और यही प्रॉब्लम है ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के साथ, राइट? कि रूल बेस्ड सिस्टम वर्क ब्रिलियंटली फॉर द सिंपल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स, बट whenever the environment becomes messy, dynamically or unpredictable, right, at those points the rule starts breaking, right? And that's why learning system becomes important. So instead of writing every rule manually, will let the systems learn the patterns from the data only and by themselves only, right? So this is what we used to do in deep learning itself. Now you can have a look over the example as well. Just have a look over these two images on the screen. On the left hand side, you can see there is a dog, and on the right hand side, you can see a self-driving car detecting a pedestrians on the road itself. Now, I want to ask you one question. So, if you were writing a traditional program, how would you tell the computers to recognize a dog? What do you think? How you are going to say about this thing? कैसे बोलोगे? कैसे लिखोगे? What conditions you are going to give? Ankita says that was very time consuming and complex. Yeah, right. Okay, can you repeat the question? Yeah, I will be repeating the question once again. Right? If you were writing a traditional program, how would you tell the computers to recognize a dog? कैसे करो, कैसे आप एक प्रोग्राम लिखोगे कि सामने जो आ रहा है that he is a dog? How you are going to write the program for this thing? Okay, okay. Just I'm looking over the chat box. Start texting your, start dropping your answers. अरे पूरा प्रोग्राम नहीं लिखना, जस्ट लॉजिक बताओ मेरे को. That how you are going to say that it is a dog. कुछ तो कंडीशन लगाओगे. For example, if it is having four legs, like something like this. Okay, I've got the answers. Mostly using motion sensors and image recognition. अरे मैं ये पूछ ही नहीं रहा. मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मैं आपको बोलूंगा कि आपको एक डॉग को फेस आउट करना है, ठीक है? सो सी नथन हैज सेज डॉग्स नो क्लोथ्स, वॉक ऑन फोर लेग्स एंड बार्क्स. ठीक है. नेहा सेज बॉडी स्ट्रक्चर, सेंस, राइट? रक्षा सेज by the sound. Ankit says it become difficult like four legs, two eyes, big, right? Also height, mostly using, okay, image recognition, mostly science. Okay, okay, it's not like that basically. ठीक है, मान के चलो कि कुछ कुछ ने सही बोला that if a object is having four legs, then it is called to be a dog. If a object has fur, then it is called to be a dog. If a object has tail, then it is called to be a dog. ऐसी कुछ लिखोगे, राइट? बट लेट्स टेस्ट द लॉजिक. व्हाट इफ अ डॉग इज सिटिंग एंड यू कैन नॉट सी द लेग्स? फिर वहां पे फेल हो गया हमारा रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग, राइट? नाउ इफ द टेल इज हिडन, या फिर आपने देखा होगा जैसे बॉक्सर है, डॉग की ब्रीड है एक बॉक्सर, तो उसका जो टेल है वो कट करवा देते हैं. अगर कट करवा दिया तो देन अगेन आपका प्रोग्रामिंग फेल हो गया वहां पे, राइट? इफ लाइटनिंग इज डार्क, अगर हम अंधेरा कर दें तो फिर फेल हो गया हमारा ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग, राइट? सडनली दोज रूल्स विल स्टॉप वर्किंग ओवर हेयर, राइट? अब एक और क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सेल्फ ड्राइविंग कार needs to detect pedestrians on a busy road,
Now just tell me, can engineers write rule for every possible situation into this or not? Like for different body positioning, for people wearing different clothes, children, adults, cyclists, we can say nighttime rain, fog. What do you think? Will it is possible to write every single possible rule? Okay. Ankita says no. Okay. Many patterns will be there. Yes. Gauri says no. Shanu says we can use the sensors. Again, how you are going to build them? Sakshi says no. Okay. Nope. Arupa says nope. Okay. Obviously. Yogita says no. Samaira says no, will need to train the model with the data. अरे तो डेटा कहाँ से लाओगे फिर आप? अब लेट्स सपोज कि आप अभी कहीं जा रहे हो, आपने तो वो डेटा फीड ही नहीं करा, किसी नई रोड पे जा रहे हो और वहां पे बहुत सारे वो हैं, बहुत सारे पेडिस्ट्रियन आ रहे हैं, सो हाउ यू आर गोइंग टू फीड द डेटा, राइट? Punev says no, no, no. Okay, yes, obviously, it cannot be possible to write the rule for every possible single situation, we can say. So instead of writing the rules like humans, what we used to do, we train the system with thousand or we can say even millions of images. So that system learn the pattern automatically that and learns that happening that will be with the deep learning models. Whatever the learning is going to happen, that will be through your deep learning models itself, right? So now just have a look over here. What was the main difference between traditional machine learning programming and the deep learning, right? So now let's compare these two. So basically in traditional machine learning and deep learning, so what we used to have that in traditional machine learning, humans do lot of work, right? When we manually decide what the feature to extract, what information is important, how the sound to be structured, how the data should be structured, right? Or the model then learns the pattern from those selected features only. But in deep learning, the process is different, right? So instead of manually selecting the features, the system itself discovers useful features automatically. So humans provide the data and the neural network learns the patterns. And that's why deep learning become very powerful and working with the images, we can say the audios, or we can say the large data sets also, right? So these all we can do with the deep learning part. Now just have a look over the flow. See, how the flow is working, right? So in traditional pro machine learning, the process usually looks like first we import the data, then humans spend lots of time doing the feature extraction, we can say, deciding what information should be given to the model. And after that, we specifically train the model and find the model that what prediction that a specific model is making, right? So in that traditional programming, human plays a very major role in designing the inputs. But now have a look towards the deep learning flow. So we'll start with the data import from here. Then but after that, what we used to do, instead of manually extracting the features, the data directly goes into a neural network. And inside that neural network, multiple layers automatically learn the patterns and representation from that specific data. And finally, you can have a look that the model produce the prediction, or we can say it, we measures our accuracy. So if we'll be saying in the simple words, then traditional machine learning is something where human design the features, and deep learning is something where the neural network learns the features automatically by observing the data, right? And that's what makes the deep learning so powerful, right? Now that we have understood about the how deep learning works conceptually, let's see something interesting. So scan the QR code on the screen. This will take you to the for a live demo where AI models can classify the images. So this type of system is trained on a very famous dataset that is called to be ImageNet, which contains millions of labeled images in that.
right? So take out your phones, scan the QR code, and we'll the try a quick live experiment with AI image recognition. Just start everyone with this thing. So once you have scanned the QR code, please drop yes in the chat box so that we'll be on the same page. Okay. Network problem, sir. Try again, Bhavya. Gita says training with lots of examples. Yes, obviously. Okay. Yeah. So are you done with that? Yes or no, everyone? Okay, Ankita says done. Sakshi says done. Yes, yes. Parvati says yes. Sakshi says yes. Done. Okay. Okay, I've got lots of done in my DMs. Okay, so let's start with that, right? So I will be opening that as well too. So you will be on this page, right? cnnplayground.live. Let it open. Is it open? Is it working for you all? Okay. Done, sir. Done, sir. No, no, sir. Sandesh says no, sir. It's not working for me as well. Okay, I guess the server is down. Let me refresh it. Yeah, server is down till mm, right now it is down. Okay, we'll try it later on, right? Now just have a look. Let's move on next. We'll see it at the last if it will work, or else we'll see in the next class, right? So let's move ahead. So now just have a look that let's understand that how machine actually see a image, right? So when you look at the picture, we what you are looking over there, जब आप इस image को देख रहे हो, what you are getting, क्या दिख रहा है आपको उस image पे? Just tell your answers in the chat box. Okay. Samaira says 8. Ankita says 8. Stephen says 8. Anand says 8. Yes. Okay. Everyone is saying 8, right? Yes. Everyone is observing the 8. Yes. So whenever we look into that specific picture, we immediately recognize that recognize it as a number. That yes, it is 8. But a computer does not see the shape the way we used to, right? So instead of that, computer used to break the images into tiny square called pixels. Now you can have a look over here, right? So for example, जब हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट क्या दिखा, हमें सिर्फ यहाँ पे सीधा 8 दिखा, राइट, इन दिस इमेज. बट जैसे ही अगर हम इसको मशीन्स के अंदर पास ऑन करेंगे तो व्हाट इट विल डू, वो उसको पिक्सल्स के अंदर डिवाइड कर देगा. नाउ यू कैन हैव अ लुक, देयर आर मल्टीपल कॉलम्स, मल्टीपल सेल्स आर देयर. इस 8 के पीछे मल्टीपल सेल्स आर देयर, सो दीज ऑल आर कॉल्ड टू बी द पिक्सल्स. ठीक है. अब इन पिक्सल्स को ये फिल करा जाता है 0 और 1 की फॉर्म पे, राइट? 0 1 0 1, राइट? ऐसे 0 0 0 1 ऐसे करके इसको फिल करा जाता है, ताकि ये देखो, ताकि ये हमारा 8 बनाए. जस्ट हैव अ लुक, राइट? अभी समझ में आया कि ये कैसे वर्क करता है? इट यूजुअली क्रिएट्स द इट ग्रिड्स बनाता है. Then it breaks into the pixels. Then each pixel has a numeric value that represent brightness, or the we can say the color. So whatever the so the what so what the machine actually receives is a grid of numbers, right? Not a specific picture. Machines को picture नहीं मिलते, उनको numbers मिलते हैं, right? As you have seen that
white pixel may be represented by 1 or black pixel may be represented by 0. So you know about grayscale, right? Grayscale के बारे में पता है सबको? तो do you know about this thing? Yes or no? Just drop your answers in the chat box and accordingly we can move. 8 Purnima says 8. No, sir. No, sir. Ankita says yes, sir. Himanshu says and colors. Okay, Gauri says 0 1. Okay, no, sir. Stephen says yes, sir. Okay. So see, what does that grayscale specifically means? कि ब्लैक एंड व्हाइट चलता था ना पहले के टाइम पे, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है? तो उसी को मशीन्स की फॉर्म में हम उसको ग्रे स्केल बोलते हैं। जो भी हमारी इमेज होती है ना ब्लैक एंड व्हाइट के फॉर्म में, उसको हम ग्रे स्केल बोलते हैं बेसिकली, ठीक है? तो इस ग्रे स्केल जो होता है ना, ये पिक्सल्स पे डिवाइड होता है, ठीक है? तो लेट्स सपोज कि जैसे ये पिक्सल्स है हमारे पास, ठीक है? तो अब यहाँ पे जहाँ पे 1 लाई कर रहा है, तो आइदर इट विल बी गोइंग टू वाइट, ठीक है, और आइदर इट विल बी गोइंग टू ब्लैक। एक एक जीरो, जैसे जीरो व्हाइट को डिनोट कर दिया और 1 हमारा जो है वो ब्लैक को डिनोट कर दिया। सो अकॉर्डिंगली इट विल वर्क विद द दिस फ्लो, ठीक है? सो फ्रॉम now, instead of seeing directly 8, the machine sees something like a matrix in the form of numbers. So, from thousands of such examples, the neural network learns the pattern that जैसे वो curve बना रहा है, edges कैसे हैं, shapes कैसी है, right? And eventually it learns to recognize that this pattern represents the digit 8, right? वो इसके pattern को समझ रहा है कि वो कैसे बना रहा है, और वो उस पैटर्न को समझते हुए वो बोलता है दैट यस, now that specific element can recognize that it is the number 8, right? So in simple terms, images are converted into the pixels, then they are fetched on the numbers, and they accordingly they learn the patterns, right? And that's how deep learning model understand the images itself, right? So is it clear till here for everyone? Yes or no? Please drop your messages over the chat box. I'm looking for that. Number 8, Sadap says yes. Okay, Sadap says no, sir, for that specific question. Okay, what about now you have got this stuff? Okay, Sakshi says yes. Anali says yes. Shanu says yes. Ankita says a digital image consisting of shades of gray ranging from deepest black 0, yes, टू द ब्राइटेस्ट वाइट, यस, 255, यस। तो वो कलर्स, वो पिक्सल का एक रेशियो होता है 255 का, कि एक एक सेल जो है वो इतना इतना होल्ड करेगा, 255 तक वैल्यूज को होल्ड कर सकता है, जीरो से लेकर के। यस, यू आर राइट। क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, यस सर, यस सर। पूर्णिमा सेज यस सर। ओके, okay, I can have a look that most of you are saying that yes, you have got the points, right? So let's move ahead, right? And now let's understand that about the biological inspirational of neural network, right? So now you can have a look that neural networks are inspired by the human brains, right? Our brain is made up of billions of neurons that communicate with each others, and each neuron receives signals, process them, and then they pass the information forward. Similarly, the artificial neural network follows the same idea, right? तो यहाँ पे क्या होता है, व्हाट वी यूज टू डू दैट, जैसे यहाँ पे डेंड्राइट्स हैं, राइट? ये ये सेंस करते हैं चीजों को, फिर ये आगे पास ऑन करते हैं एक्सॉन्स को, और फिर उसके बाद ये पास ऑन करते हैं अगले नेटवर्क, इसको, न्यूरल्स को, राइट? अकॉर्डिंगली इट वर्क्स। तो ऐसे ही हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बना हुआ होता है। जो ये डेंड्राइट्स होते हैं, दे आर नथिंग बट योर इनपुट। ये हमारे होते हैं डेंड्राइट्स, इनपुट्स होते हैं, राइट? देन जो हमारा न्यूक्लियस होता है, या फिर हमारा, आप बोलो, जो भी हमारे एक्सॉन्स होते हैं, जो भी इसको आगे लेकर के जाते हैं, दैट आर कॉल्ड टू बी दीज थिंग्स। हिडन लेयर्स बोलते हैं हम इसको, हिडन लेयर्स, राइट? और फिर उसके बाद ये हमारा जनरेट करते हैं आउटपुट, आगे जाकर के हमें बताते हैं चीजें कि यस, हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, राइट? So this is what we usually do. So instead of biological neurons, we have created this thing that is called to be the artificial neurons, right? And this is for the softwares, right? So these artificial neurons connect together and learn the patterns specifically from the data, just like our brain used to do. That learns from your experiences, right? And that's why we used to call it as a neural network,
right? Now just have a look towards the next slide, that is what is a neural network, right? So now let's understand that what a neural network actually is. So neural network is a system that has been inspired by how the human brain process the information. It works majorly into three parts, or we can say the three stages, right? The first one is called to be your input layer. This one, this is called to be your input layer. Then what we usually do over here, this is somewhere the model receives the raw information from the images. Things, we can say the things like ear is there, fur is there, paw is there, we can say the edges are there, we can say the shapes are there, right? And then they usually move, then the data usually moves through the hidden layer. This usually moves with the hidden layer, this part, right? And what does this hidden layer usually do? So these layers process the information and try to detect the patterns and the relationship in them, right? And after this hidden layers, finally we used will be reaching with the output towards the output layer, right? Where the model will be making its final prediction कि हाँ अब मेरा क्या निकलेगा. So in this example, the system analyzes the feature and conclude that yes, it is a dog, not a cat, not a rabbit, right? So in simple terms, if I will be saying we have given the input, then this is called to be your input. We have given the input, then we have gone with the pattern learning, then we have got the output, that is called to be your predictions, right? So accordingly this neural network specifically works, right? So is it clear to everyone? Yes or no? Is it clear till here? Just drop your messages. Till then I will be having the water. Okay, Deep says yes, Yogita says yes, Sadap says yes, sir, clear. Okay, that's totally great. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Puneet says clear, sir. Sakshi says yes, sir. Manali says yes. Ankita, yes. Himanshu, yes. Harshit, yes, sir. Okay, that's totally great. So everyone is on the same page, right? So let's move ahead. Now let's have a look towards the structure of a neural network, right? So let's break it down. So first we have the input layer. As usual, we have seen. So this layer usually receives the raw data such as pixel value from a specific image, we can say, right? Then comes the hidden layer. So this layer performs most of the work, we can say. They analyze the pattern gradually and gradually extract useful features from the data. And finally, we have our output layer. This layer produces the final prediction, or we can say the classification. And these layers are connected with weight connection, right? So I will let you know in the further slides that how usually it works. ठीक है कि कैसे ये work कर रहा है. I will be letting you know in a very best manner so that you all can get that point in a single class, single session only. So, right? So let's move ahead for right of now, right? So the next slide comes over here. That is for the evolution of AI architectures, right? So AI models have evolved significantly over the time, right? अब पहले के टाइम पे क्या था? पहले के टाइम पे हम we were using the keypads. Now we using the screen touch move for nail touch आया बीच में. फिर nail touch के बाद we shifted to screen touch, right? So accordingly we are also evolving. So accordingly our models are also evolving, right? सो अब पहले क्या चलता था? सबसे पहले स्टार्टिंग में आया सिंगल लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क दैट आर कॉल्ड टू बी योर परसेप्ट्रॉन्स. फिर आया मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क दैट इज कॉल्ड टू बी योर नथिंग विच वी यूज टू कॉल टू बी एएनएन ओनली, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, उसी को बोला जाता है. विल लेट यू नो. Then researchers developed CNN, that is called to be your convolutional neural network,
which are extremely powerful for the image recognition and we can say the computer vision, right? Then after that we came with the RNN. उसके बाद RNN आया. So that has been designed to handle the sequential data, like we can say text, speech, or we can say the time series analytics, right? So these types of things are being handled by the RNNs. And today, one of the most powerful architecture is called to be your transformers, which performs modern systems like large language models, or we can say the generative AI, right? So over the time, AI architectures have become more specialized, more powerful, and more capable of handling the complex data, right? Now just have a look one by one for everything. So let's start with the artificial neural network, right? So I will be taking you to the Miro, right? I will be explaining you over here this thing in a good manner so that you can get the points at. Okay, let me delete this one. Let's create a new board. Where it is. Okay. Okay, let's start, right? So the screen is visible to you all, right? Am I right? It is visible. Okay. Okay. Yes, 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 it is visible. Okay. Okay, now just have a look, right? For example, right? For example, I have created two things, right? That is called to be something like this thing, this circle. Just allow me for a moment. I have created one. I've created the another one, right? So I have created two things. That this one is going to be my x1. This one is going to be my x2, right? So this is going to be my. This one is called to be your input layers. ठीक है, इसको हम बोलते हैं input layers, right? अब लेट्स सपोज कि मेरे पास एक डेटा सेट है, ठीक है? I'm having one data set, right? In this data set, I'm having IQ, study hours, and along with this, I'm having the result. My either it is pass or fail. ठीक है? So let's suppose if I will be writing over here 95, 3, he failed, 115 IQ, 4 hours study, he pass, right? So here it is going to be my, this is going to be my x1, this is going to be my x2, and this is going to be my final output, right? Actual output, we can say. This is going to be my actual output, right? Now just have a look, right? कि अगर मेरा ये डेटा है, right? So अगर मेरे पास ये डेटा है, let's suppose, let's take an example now, ठीक है? Let's suppose I am looking into the camera, right? मैं अभी कैमरा में देख रहा हूँ. तो मैं अपने आंख से देख रहा हूँ, राइट? तो यहाँ पे जो मैं आंखों से देख रहा हूँ दैट इज माई सेंसरी, दिस वन सेंसरी ऑर्गन, राइट? जो कि मैं चीजें सेंस कर पा रहा हूँ, मैं मतलब देख पा रहा हूँ चीजों को, राइट? तो वो देख मैं कैसे पा रहा हूँ, मेरे को कैसे पता चल रहा है दैट दैट आइदर मैं अपने कैमरा को मैं कैसे देख रहा हूँ कि ये जो मैं कैमरा देख रहा हूँ दिस इज कॉल्ड टू बी अ कैमरा, ये कौन सी, इसका क्या शेप है, या फिर लेट्स सपोज कि इसका क्या कलर है, इस कैमरा का क्या कलर है, राइट? सो ये कैसे प्रोसेस हो रही है चीजें,
राइट? द क्वेश्चन कम्स ओवर। तो फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे मैं अभी इन सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इन सारी चीजों को देख रहा हूँ, तो मैं अब आंखों से देख रहा हूँ, वो पीछे न्यूरॉन्स के पास पास हो रही है, न्यूरॉन्स के पास पास हो रही है, तो फिर वो उसको प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है। एंड फिर वो मेरे को जाकर के कहीं ना कहीं आंसर्स दे रहा है दैट यस इट इज अ कैमरा, इट इज इन दिस शेप एंड इट इज इन ब्लैक कलर, राइट? लाइक दैट ओनली, राइट? तो सोचो ये सारी चीजें कितनी फास्ट हो रही हैं। अकॉर्डिंगली हमने इसी की तरह हमारा ये न्यूरल नेटवर्क स्पेसिफिकली फॉर्म करता है। ठीक है? अब देखो कि कैसे फॉर्म करता है, क्या क्या चीजें होती हैं और क्या क्या नहीं होती। ठीक है? अभी ये पता चल गया कि इनपुट कैसे आता है, जैसे हमने देखा, मैंने देखा, ऑब्जर्व करा, पीछे प्रोसेस हुआ और फिर मेरे पास आया कि यस दिस इज अ कैमरा, राइट? तो यहाँ पे इनपुट प्रोसेस हो गया, राइट? अब इनपुट प्रोसेस होने के बाद हमारे पास एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं हिडन लेयर। ठीक है? अभी जो बात हो रही है, यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है, दिस डिस्कशन इज रिलेटेड टू, आई विल राइट ओवर हियर दैट दिस डिस्कशन इज रिलेटेड टू सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क, सिंगल लेयर न्यूरल, एंड आई विल राइट हियर नेटवर्क, राइट? सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क, इसी को हम बोलते हैं नन अदर देन परसेप्ट्रॉन। ठीक है? इसी को हम परसेप्ट्रॉन बोलते हैं। अब जस्ट हैव अ लुक, ध्यान से देखना, ठीक है? कि लेट्स सपोज, अब मेरे को इनपुट पता चल गया कि मैंने चीजें देखी, और मेरे चीजें देखने के बाद मेरे को पता चल गया कि हाँ ये मेरा इनपुट आ गया मेरे पास, राइट? X1 X2। ठीक है? अब यहां पर, अब ये जो मैंने बताया कि मैंने आंखों से देखा कि ये कैमरा है, राइट? अब वो पीछे प्रोसेस हो रहा है, तो प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है, कैसे प्रोसेस हो रहा है, राइट? तो एक लेट सपोज कि ये जो मेरी हिडन है, जो मैंने देखा कि हाँ मेरे पास प्रोसेसिंग हो रहा है, वो हमें तो नहीं दिख रही, वो तो हिडन है, राइट? तो लेट सपोज कि ये मैंने एक और बनाया, ये मेरा प्रोसेसिंग हो रहा है यहाँ पे। सो दिस इज माई नन अनदर देन हिडन लेयर, हिडन लेयर, जहां पे मेरे को, हमें नहीं दिख रहा कि क्या प्रोसेसिंग हो रही है, बट आओ देखते हैं कि क्या प्रोसेसिंग एक्चुअली में हो रही है, राइट? सो दिस वाज माय इनपुट लेयर एंड दिस वाज माय हिडन लेयर, राइट? अब ये जो हिडन लेयर है, अब यहाँ पे दो चीजों में वर्क करा जाता है, दो चीजों, दो स्टेप्स होते हैं यहाँ पे, दो स्टेप्स परफॉर्म होते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी हिडन लेयर। हिडन लेयर यूजुअली वर्क्स विद टू प्रोसेस, राइट? ठीक है? टू प्रोसेस होते हैं यहाँ पे, दो प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज योर, इसको डिवाइड कर देते हैं बीच से। ठीक है? नाउ दिस इज माय स्टेप वन एंड दिस इज माय स्टेप टू। ठीक है? ये दो स्टेप होते हैं। अब दोनों स्टेप में होता क्या है, ठीक है, ये हम अभी समझेंगे, राइट? बट उससे पहले एक छोटी सी चीज समझो, कि जब भी हम इनपुट लगाते हैं, जब भी हम इनपुट भेजते हैं, लेट्स सपोज मैंने एक ये इनपुट लिया और एक ये इनपुट लिया, ठीक है? जब भी मैंने ये इनपुट लिया, ठीक है, जब भी मैंने ये इनपुट लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी मैं इनपुट डालूंगा, ठीक है, जब भी मैंने ये इनपुट लिया X1, ये इनपुट लिया X2, ठीक है, जब भी मैं इनको इसमें डालूंगा तो ये क्या होते हैं, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, राइट? ये पहले से ही कनेक्टेड रहेंगे इसके अंदर। ठीक है? ये पहले से ही कनेक्टेड रहेगा इससे, ये भी कनेक्टेड रहेगा इससे, राइट? ये पहले से ही कनेक्टेड रहेंगे। अब जब ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं, तो ना इनके ऊपर स्टेप वन में क्या होता है, अब आओ वो देखते हैं। इनमें क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जब ये आपस में कनेक्ट करते हैं ना, तो इन पे कुछ वेट अटैच हो जाता है, W1, W2, इस पे कुछ वेट अटैच हो जाता है। और यही नहीं, सिर्फ वेट नहीं, इस पे ना बायस भी अटैच हो जाता है, एक एक और चीज अटैच हो जाती है इसके ऊपर, दैट इज कॉल्ड टू बी योर बायस, जिसको हम बायस बोलते हैं, बायस। लेट मी erase this from here, let me write it over somewhere here, हिडन लेयर। ठीक है? इसके ऊपर हम बायस अटैच कर देते हैं। जब, अब ये इतना समझ में आया, ये सर एवरीवन?
आई एम लुकिंग ओवर द चैट। इतना क्लियर हुआ? ओके ओके ओके, यस यस, ओके यस। व्हाट अबाउट अदर्स? इतना क्लियर है सबको? क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर। ठीक है। नाउ जस्ट हैव अ लुक ओवर द स्क्रीन। ठीक है, चलो आओ देखो कि लेट्स सपोज, अब द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज दैट कि अब हमने वेट तो अटैच कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेट के साथ अटैच रहता है और बायस के साथ अटैच रहता है, ठीक है। फिर जाकर के इसका कहीं ना कहीं निकलता है, जो हमारे पास फाइनल आउटकम आता है, दैट इज कॉल्ड टू बी आर आउटपुट, राइट। फिर हमारा जो फाइनल निकलता है दैट इज कॉल्ड टू बी आर आउटपुट, ठीक है। इसको हम अपना आउटपुट बोलते हैं। वो हमारा फाइनल आउटपुट निकलता है, ठीक है। नाउ जस्ट हैव अ लुक कि जब भी मैं यहाँ पे अपना भेज रहा हूं, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो हमने वेट अटैच करा, ठीक है, ये जो हमने वेट अटैच करा अपना यहां पर, इसका पॉइंट ऑफ व्यू, और ये जो हमने अपना ये बायस अटैच करा यहाँ पे, ये दोनों करा ही क्यों, इन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, राइट। तो इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हम, अब देखो, इससे पहले, इसको समझने से पहले एक चीज देखो कि ये स्टेप वन में होता क्या है, ठीक है। तो स्टेप वन में क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन ओवर हेयर, ठीक है। आई विल राइट हेयर स्टेप वन, स्टेप वन, ठीक है। अब स्टेप वन में क्या होता है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड। हम यहाँ पे जेड का वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। दैट इज नथिंग बट योर, नाउ जेड का वैल्यू है क्या, और ये जेड है क्या, तो जेड इज योर इनपुट, whatever the input is there that is going to be multiplied by this weight, राइट। तो यही हमारा z है कि जो भी आपका इनपुट आ रहा है उसको वेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। वही हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि कितना पूरा टोटल वेट आ रहा है हमारे पास along with the bias, राइट। लेट्स हैव अ लुक कि जैसे स्टेप वन में क्या होता है, स्टेप वन में बेसिकली सबमिशन करा जाता है, राइट। सो आई विल राइट हियर z में क्या होगा, हमारा इनपुट दैट विल बी गोइंग टू मल्टीप्लाइड बाय वेट, राइट। और अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, z इज इक्वल टू, कैसे हो रहा है, क्या कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, z इज गोइंग टू एक्स वन में कैसे रहा है, एक्स वन मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू वन, राइट। एक्स वन डब्ल्यू वन प्लस समीशन ऑफ, राइट, समीशन ऑफ बोला था, एक्स टू डब्ल्यू टू। यही दो वेट आया मेरे पास, एक्स वन डब्ल्यू वन, एक्स टू डब्ल्यू टू, यही दो इनपुट था। दोनों इनपुट आ गया मेरे पास, एक्स वन एक्स टू, दोनों वेट आ गया मेरे पास, डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू। और इसमें मेरे को क्या बोला था, दैट इज वी विल बी हैविंग दिस बायस। तो यहाँ पे मैं बायस को अटैच कर देता हूं, दैट इज गोइंग टू बी बी। तो ये होता है पहला चीज, पहला स्टेप हमारे हिडन लेयर के अंदर कि वो ऐसे कैलकुलेट करता है, राइट। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं समीशन। मैं लिख देता हूं, समीशन ऑफ वेट्स अलोंग विथ इनपुट एंड बायस, ठीक है। ये हमारा समीशन हुआ, यानी कि तीनों को हमने प्लस कर दिया, राइट। क्या करा हमने, तीनों को प्लस कर दिया, राइट। अब एक इसी फॉर्मूले को देखो, अगर मैं चाहूं तो इसी फॉर्मूले को, जो ये हमने लिखा है यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से लिख सकता हूं, देखो कैसे। अगर मैं चाहूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट समीशन के फॉर्म में, दैट z इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ i इज इक्वल्स टू वन एन डब्ल्यू आई एक्स आई प्लस बायस, राइट। इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूं। अब ये जो फॉर्मूला है, दिस इज नथिंग बट योर, दिस इज नथिंग बट योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, राइट। जो कि हमारा क्या होता है, जो कि हमारा लीनियर रिग्रेशन होता है, राइट। भी किसको किसको याद था ये चीज,
दैट y इक्वल्स टू mx प्लस सी हम किसमें यूज करते हैं, लीनियर रिग्रेशन में, राइट। अभी यहाँ तक क्लियर है सबको? यस और नो? जस्ट ड्रॉप योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। ओके, यस सर, यस सर, यस सर, अंकिता says yes sir, Anand says yes sir, Sakshi says yes sir, Gayatri says yes sir, Sneha says yes sir, Shanu says yes sir, Indushri says yes sir. Okay, so it means that you all are clear till here, right? अब आगे देखते हैं, right? Let's have a look. अब ये हमारा क्या हुआ? इट मीन्स दैट दिस फॉर्मूला इज यूज्ड इन आर रिग्रेशन प्रॉब्लम्स, राइट? ये हमारा रिग्रेशन की प्रॉब्लम्स के अंदर यूज होता था, राइट। सो अब देखो इंपॉर्टेंस क्या था, राइट? अब इसकी बात करते हैं, राइट। स्टेप वन में समझ आया कि क्या क्या हुआ। अब देखो कि ये वेट और ये बायस, ये अटैच करना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट इसको क्यों दिया जाता है, ठीक है। तो लेट सपोज कि ये मेरा हैंड है, राइट। अभी मैं अपने हाथ के ऊपर एक हॉट कप ऑफ वाटर रख देता हूं, ठीक है। तो क्या होगा इस सेंस में, मैं फटाफट से हाथ हटाऊंगा, मेरे को पेन फील होगा और मैं अपना फटाफट से हाथ हटाऊंगा, राइट। तो जब मैं अपना हाथ के ऊपर अपना एक कप ऑफ वाटर रखा, मैंने हॉट कप ऑफ वाटर रखा, तो उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे जो भी मेरे यहाँ पे इस हैंड के जो भी न्यूरॉन्स थे वो सारे एक्टिव हो गए एकदम से, राइट। वो सारे के सारे वहां पे जो भी वेट था वो एक्टिव हो गया, न्यूरॉन्स का जो भी वेट था मेरे इस हैंड के अंदर वो एक्टिव हो गया, राइट। और अकॉर्डिंगली वो मेरे को प्रोसेस करा कि यस इट इज हॉट, इट इज पेनिंग यू एंड यू हैव टू रिमूव योर हैंड, राइट। ऐसे करके मेरे को लगा। तो तो अब ऐसा तो नहीं हुआ ना कि लेट सपोज कि मेरे इस हाथ पे कप ऑफ वाटर रखा हुआ है और मेरे इस हैंड के भी न्यूरॉन्स एक्टिव हो गए, नहीं हुआ ना ऐसा। मेरे को सिर्फ इस हैंड में लगा कि नहीं गर्म है, हटाओ हाथ जल्दी से, ठीक है। तो इट मीन्स कि मेरे सिर्फ इस हैंड के न्यूरॉन्स एक्टिव हुए, इस हैंड के नहीं, राइट। तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब भी न्यूरॉन्स को एक्टिव करने का जो भी ये वेट्स होते हैं, ये वेट्स जो यहाँ पे भी न्यूरॉन्स के वेट होंगे ना, इन्हीं वेट्स का काम होता है न्यूरॉन्स को एक्टिव करना, राइट। न्यूरॉन्स को बोलना कि यस समथिंग इज गोइंग है, राइट। तो न्यूरॉन्स को जो एक्टिव करते हैं वो ये वेट्स होते हैं, ठीक है। एंड अब जो ये वेट्स होते हैं ना, जैसे कि लेट्स सपोज मेरे हैंड्स में भी है, ठीक है। तो मेरे पास जो भी न्यूरॉन्स है दे दे ऑल आर हैविंग सम वेट्स। तो जो ये वेट्स होते हैं दीज ऑल वेट्स आर रेंडमली इनिशियलाइज्ड। ये रेंडमली इनिशियलाइज होते हैं, इसको कोई भी ह्यूमन या फिर कोई भी इसको इनिशियलाइज नहीं करता, ये रेंडमली इनिशियलाइज होते हैं। तो अब मान के चलो कि मेरे पास कुछ भी वेट इनिशियलाइज हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वट एवर इट इज गोइंग टू बी, ठीक है। अब एक केस समझो कि मान के चलो कि मेरा वेट जो है वो जीरो इनिशियलाइज हो गया किसी को, ठीक है। मेरा वेट जो था वो जीरो इनिशियलाइज हो गया किसी को। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, अब अगर जीरो इनिशियलाइज हो गया, यहाँ पे ये वेट जीरो हो गया, ये वेट जीरो हो गया, तो ये तो सारा ही खत्म हो गया, सब कुछ ही जीरो हो गया, राइट। सब कुछ ही जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए कि सब कुछ जीरो ना हो, सब कुछ जीरो ना हो, कुछ ना कुछ छोटी सी वैल्यू हमारे पास रहे जिससे हम अपने न्यूरॉन्स को स्टार्ट कर सके, उनको एक्टिवेट कर सके। इसी चीज के लिए हम यूज करते हैं बायस, इसीलिए हमने बायस को अटैच करा है कि अगर वेट गलती से भी जीरो इनिशियलाइज हो गया तो हमारे पास बायस रहेगा अपने न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करने के लिए। ना अभी समझ में आ गया कि हम वेट क्यों यूज करते हैं, बायस क्यों यूज करते हैं। हैव यू गॉट द पॉइंट? स्टेप वन में क्या होता है, वेट्स क्यों यूज करे जाते हैं, बायस क्यों यूज करा जाता है। हैव यू गॉट दिस थिंग? जस्ट ड्रॉप योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स, आई एम लुकिंग फॉर दैट। ओके, संदेश says yes, Yashvi says yes, okay, Sakshi says yes, okay, Raksha says yes sir, okay, Sayed says go to break my fast, okay Sayed, okay, Yogita says yes, Harshit says yes sir, okay, Sneha says yes sir, okay, that's totally great. It's great to see that you all are getting the points, right? Now just have a look, ठीक है। अभी इतना समझ में आ गया, लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स द सेकेंड स्टेप, राइट। अब आओ उसकी तरफ देखते हैं, ठीक है। ये स्टेप वन था,
let's create for the step 2 over here, somewhere here, right? तो सॉरी, तो लेट्स सपोज यहाँ पे लिख देते हैं स्टेप 2, सॉरी, दिस इज आर स्टेप 2, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या चलता है, ठीक है, यहाँ पे तो हमने लिख दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या चलता है हमारा, समीशन, here we usually find z, right? Now here we use activation function, एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आओ अब समझते हैं ये क्या होता है और कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये, हाँ देखो, सॉरी फॉर दैट, सी, कि अब हमें पता चल गया कि फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास हम z कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। दैट इज नॉट, सॉरी, दैट इज नन अनदर देन गोइंग टू बी समीशन ऑफ I is equals to 1 to the power n, that is going to be wi xi plus bias। यही था हमारा स्टेप 1 में, यही चल रहा था, ठीक है, विच इज नन अनदर देन y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था कि ये हमारा यूज होता है लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, राइट। बट अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल बी गेटिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट विल बी नॉन लीनियर सेपरेबल प्रॉब्लम्स, राइट। व्हाट इफ, आई विल राइट हियर, व्हाट इफ वी हैव टू सॉल्व द नॉन लीनियर सेपरेबल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। इस सिनेरियो में क्या होगा, व्हाट विल बी डूइंग, विल बी मूविंग विद द, इस सिनेरियो के अंदर विल बी मूविंग विद द एक्टिवेशन फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। इस चीज के लिए यूज करा जाता है एक्टिवेशन फंक्शन, जिसको वी यूज टू, अभी ये किस लिए यूज होता है, नॉन लीनियर, लीनियर सेपरेबल प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। ये नॉन लीनियर सेपरेबल प्रॉब्लम्स के लिए यूज होता है, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है, तो ये भी ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं, मैं आपको एक दो के एग्जांपल्स दिखा देता हूँ आज, राइट। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट इज माय स्टेप वाइज एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक, स्टेप वाइज स्टेप एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, स्टेप एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो हमारा जो भी डेटा आएगा अब आगे से, लेट सपोज कि हमारी z की वैल्यू निकल गई, z की वैल्यू निकल गई, तो अब z की वैल्यू कहाँ जाएगी, तो z की वैल्यू को हम लाई करवाते हैं अपने ग्राफ के ऊपर। तो वो लाई कैसे होता है, वो इनएक्टिवेशन फंक्शंस की वजह से होता है। लेट सपोज कि ये मैंने एक लेट सपोज ये मैं, सॉरी, जस्ट हैव अ लुक कि ये मैंने अपना एक, ठीक है, ठीक है, ये मैंने अपना एक ग्राफ प्लॉट करा, ठीक है। जस्ट हैव अ लुक ओवर, यहाँ पे मैंने डाला अपना एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ जेड, जेड निकाला था हमने, ठीक है। यहाँ पे हमने जेड डाला, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी आर जेड, दिस इज गोइंग टू बी आर एफ ऑफ जेड, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, तो अगर, अग इफ, लेट सपोज कि इफ माई वैल्यू ऑफ जेड इज जीरो और लेस देन जीरो, देन इट इज गोइंग टू बी लाई ऑन जीरो। वो मेरा कहाँ लाई करेगा, वो इस जीरो के ऊपर लाई करेगा, राइट। कहाँ लाई करेगा, वो मेरे जीरो पे लाई करेगा। और एल्स, अगर इफ माई वैल्यू ऑफ जेड इज मोर देन जीरो, इज ग्रेटर देन जीरो, देन इट इज गोइंग टू लाई ऑन वन, वो मेरा वन पे लाई करेगा, ठीक है।
तो इसी को हम बोलते हैं कि स्टेप वाइज फंक्शन यूज होता है। एक स्टेप यहाँ से और ये एक स्टेप यहाँ से ऐसे चढ़ गया। ठीक है। तो यही काम करता है स्टेप वाइज फंक्शन, कि वो क्या करता है, वो 0 और 1 पे वैल्यूज को लाई करवाता है। अब कैसे लाई करवाता है, वो इनके बेसिस पे लाई करवाता है, दैट इफ z is less than equals to 0, then the value is going to be 0, and if z is greater than equals to 0, then it is going to be, then the value is going to be 1, right? So according to this, usually this activation, stepwise activation function works, right? अभी इतना समझ में आया सबको? Yes or no everyone? स्टेप वाइज कैसे वर्क करता है, क्या करता है स्टेप वाइज, बेसिकली एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर क्या होता है, इतना समझ में आया? ओके। Okay. Uh, you have written your name as K. So if in case the weight turns to be zero, we need bias to keep the neurons active, right? Yes, you are right. अगर वेट जीरो हो गया तो इसीलिए बायस रखते हैं ताकि उनको एक्टिवेट करा जा सके। ओके, अंकिता सेज यस सर, क्लियर टिल हेयर। व्हाट अबाउट रेस्ट? इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी, राइट? इट्स ऑन यू। If it is clear, you can drop your messages. I am looking over the chat. Okay. Yashvi says, explain once more, sir. Sir, will the video for this be uploaded on the dashboard too? I don't know about this thing. Nagita says yes, sir. Preeti says yes, sir. Okay. Shanu says clear, sir. ठीक है। For sir, can you please? Yeah. ठीक है। देख लो एक बार और देख लो जिसको समझ में नहीं आया। तो स्टेप वाइज एक्टिवेशन जब हम यहाँ पर आए, यहाँ पे हमने देखा कि स्टेप वन में क्या हो रहा था, कि व्हाट इट वाज डूइंग द समीशन ऑफ दीज थिंग, इट वाज फाइंडिंग द जेड। ठीक है। अब स्टेप वन के बाद स्टेप टू भी चलेगा हिडन लेयर के अंदर। तो हिडन लेयर के अंदर क्या होता है कि स्टेप टू के अंदर अब हम हमारे पास दो तरीके की प्रॉब्लम आती है। एक तो जो कि लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं, और एक जो नॉन लीनियर सेपरेबल प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि जिनको हम लीनियर रिग्रेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है। तो उस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो उस तरीके की प्रॉब्लम्स में हम यूज करते हैं एक्टिवेशन फंक्शन का। ठीक है। अब उसी उसी में का एक एक्टिवेशन फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड टू बी योर स्टेप वाइज एक्टिवेशन फंक्शन। अब ये क्या करता है कि जो भी आपकी वैल्यू आई है जेड की, ठीक है, जो भी आपकी जेड की वैल्यू आई है स्टेप वन के अंदर, अगर वो वैल्यू जीरो से जीरो है या फिर जीरो से नीचे है, तो वो उसको जीरो पे लाई करा देगा यहाँ पे। ठीक है। और अगर वो जीरो से बड़ी है वैल्यू, तो उसको वन पे लाई करवा देगा। ठीक है। तो ये ऐसे करके एक स्टेप बना देता है। इसी यही काम करता है स्टेप वाइज एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है। कि अगर जीरो से बड़ी है तो इट इज गोइंग टू बी वन, एंड जीरो से छोटी है तो देन इट इज गोइंग टू लाई ऑन जीरो। ठीक है। इज इट क्लियर टिल हियर नाउ? अभी क्लियर है? ओके, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, डन 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 डन। नाउ जस्ट हैव अ लुक। ठीक है। अभी आगे देखो। अब ऐसे ही क्या होता है, अब मेन चीज आओ अब देखते हैं कि चलो यहाँ तक हो गया हमारा। ठीक है। यहाँ तक हो गया, ये सारा का सारा यहाँ तक हिडन लेयर तक का प्रोसेस पूरा हो गया। अब देखते हैं कि आउट ट्रेनिंग कैसे होता है और हमारा आउटपुट कैसे निकलता है, राइट? आई विल राइट हियर, लेट्स सी हाउ ट्रेनिंग वर्क्स, राइट? जस्ट हैव अ लुक। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या करा था स्टार्टिंग में, व्हाट वी हैव डिड, हमने ये लिया था, इनपुट लिए थे दो, राइट? हमने एक ये इनपुट लिया था, एक ये इनपुट लिया था। ठीक। इसको इसमें डाला था, हिडन लेयर्स में। हिडन लेयर में डाला था। ठीक। देन इसको कनेक्ट करा गया था। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था। ठीक है। नाउ हियर वी हैव अटैच्ड आवर इनपुट्स x1 x2। ठीक है।
तो डेटा सेट के हिसाब से हमारा x1 x2 क्या था? कम टू द डेटा सेट, 90, x1 था 95, x2 था 3। ठीक है, यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, दिस वॉज आर 95, दिस वॉज आर 3। ठीक है, अब लेट सपोज, हाँ यहाँ पे मैंने W1 अटैच करा था, वेट W2 अटैच करा था, और अपना एक बायस अटैच करा था। ठीक है, अब लेट सपोज, ठीक है, लेट्स कैलकुलेट द वेट एज वेल। अरे दिस थिंग, आउटपुट, ठीक है, डन फिर है। ठीक है, अब लेट सपोज हमने वेट अटैच करवाया। अब जब हिडन लेयर्स का सब कुछ आया, ठीक है, हिडन लेयर्स कर कर लिया सब कुछ, हमारा z का वैल्यू निकल करके आ गया। लेट सपोज कि हमारा एक्टिवेशन फंक्शन लगा, तो एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर उसने दिखाया कि वो 0 से बड़ी है वैल्यू, तो उसने 1 पे ड्रॉप कर दिया, राइट। तो लेट सपोज कि मेरा आउटपुट जो आया दैट इज 1, वो मेरा 1 आया आउटपुट। ठीक है, मेरा आउटपुट जो आया वो 1 आया। तो जो ये 1 आया दैट वाज माय प्रिडिक्टेड वैल्यू, राइट। ये मेरा क्या था? ये मेरा वाई हैट था, यानी कि मेरा प्रिडिक्टेड वैल्यू था कि 1 आया। बट एक्चुअल वैल्यू क्या था इसका? लेट्स हैव अ लुक ऑन द डेटा। एक्चुअल वैल्यू था कि ये 0 था, यानी कि ये फेल था। तो एक्चुअल वैल्यू क्या था मेरा? दैट वाज 0। अब ये डिफरेंस कैसे निकालेंगे कि हमारा एक्चुअल में इसका क्या आया क्या नहीं आया? तो हम जो इसका जो डिफरेंस निकालते हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू y माइनस वाई, यानी कि प्रिडिक्टेड माइनस, यानी कि प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल वन। लिख भी देता हूं, प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल। ठीक है, तो मेरा प्रिडिक्टेड क्या था? 1, माइनस एक्चुअल क्या था? 0। तो इट्स गोइंग टू बी अगेन 1। इट मीन्स कि यहाँ पे जो मेरा वैल्यू आया, यानी कि यहाँ पे जो मेरा आया आंसर, आउटपुट आया, दैट इज गोइंग टू बी 1। वो मेरा 1 आया। इट मीन्स कि वो मेरा एरर है, राइट। अब इस एरर को हमको रिड्यूस करना है। ये हमारा जो होता है, ये हमारा जो निकल करके आता है वो उसको हम एरर बोलते हैं, राइट। अब इस एरर को हमको रिड्यूस करना होता है, 0 लेकर के आना होता है, या फिर नियरेस्ट टू 0 रहना चाहिए ये, तभी ये हमारा एक्यूरेट माना जाता है। अगर 1 आ गया इट मीन्स कि वो गलत है, आप उसको और रिड्यूस करो। अब वो रिड्यूस कैसे होगा? और राइट, द क्वेश्चन कम्स ओवर हियर कि वो रिड्यूस कैसे होगा। ठीक है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए व्हाट वी यूज टू डू, हम उसको दोबारा से जाते हैं, दोबारा से वेट को अपडेट करते हैं, उसकी वेट को बढ़ाते हैं, दोबारा से बढ़ाते हैं, राइट। फिर दोबारा से अपना प्रोसेस चलाते हैं सेम। फिर देखते हैं कि इसकी इसका आउटपुट फाइनल ये डिफरेंस कितना आया। ठीक है, अगर वो 0 के नियरेस्ट आ गया, 0.05 आ गया ऐसे समथिंग, या फिर 0 आ गया, देन इट इज फाइन, देन इट इज ग्रेट, राइट। बट अगर वो स्टिल 1 आ रहा है, या फिर 0.9 आ रहा है, 1 के आसपास आ रहा है, we'll again move, we'll again increase the weight, then again we'll follow the same process। इसी को हम बोलते हैं फीड फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, राइट। अब भी समझ में आया इतना? अभी देखो, जो भी हम कर रहे होते हैं, राइट, इसी को, जो भी अभी हमने ये चीज देखा, दिस वन इज कॉल्ड टू बी योर, दिस वन इज कॉल्ड टू बी योर सिंगल लेयर, सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन मॉडल, जिसके अंदर सिर्फ एक हिडन लेयर है। ठीक है, इट हैज वन हिडन लेयर। ठीक है, अब मल्टीपल हिडन लेयर्स लगा दूंगा तो उसको हम बोलेंगे ANN, फिर आएगा CNN, फिर आएगा RNN, राइट। इज इट क्लियर टिल हेयर फॉर एवरीवन? जस्ट लेट मी नो अबाउट दिस थिंग। इज इट क्लियर टू यू ऑल कि क्या हुआ, कैसे हुआ? यस सदा, यू कैन। ओके, Ankita says yes sir, it's clear. Yashi says yes sir, clear. Okay, Preeti says yes sir, clear. Okay, okay, that's totally great, right? Now just have a look। ठीक है, अभी आगे चलते हैं अपने स्लाइड्स का। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर व्हाट वी यूज टू हैव, वी हैव मल्टीपल हिडन लेयर्स, राइट। अभी सारा सिनेरियो समझ में आ गया कि इनपुट लेयर होता है, इनपुट लेयर से फिर वो आगे जाता है यहाँ पे, फिर वो सेम दोबारा से यहाँ पे वही स्टेप 1 स्टेप 2 चलेगा, राइट। यहाँ पे अगेन, यहाँ पे स्टेप 1 स्टेप 2 चलेगा, यहाँ पे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 1, फिर अगेन यहाँ पे स्टेप 1,
स्टेप 1 स्टेप 2, फिर वो हमको आउटपुट्स जनरेट करके देगा, राइट, कि वो कौन सा है, ऑर्चिड है कि रोज है। तो ऐसे वर्क करता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, राइट। नाउ जस्ट हैव अ लुक टुवर्ड्स द सीएनएन। तो अब सीएनएन का देखते हैं कि सीएनएन, हाउ सीएनएन यूजुअली वर्क्स विद, राइट। So for images, one of the most, it is called to be the one of the most powerful models, that is called to be your convolutional neural network, or usually we used to say it as a CNN, right? So now you can think of CNN as a pattern detective for the images, right? So instead of analyzing the whole image at once, CNN usually scan the image using a small filters, we can say, and these filters move across the images and try to detect the patterns like edges, corners, we can say the shapes, textures, right. Now for example, in any face image, early layers may detect the edges or the curves, and later on the rest of the images can detect eyes, can detect the nose, can detect the mouths. Accordingly it works, right. So and eventually the network can even recognize the faces in the crowd as well, right. So CNN are extremely powerful for the tasks such as, we can say, image classification, we can say object detection, we can say facial recognition, right, or we can say the medical image analysis as well, right. So now just have a look, right. Now let's test that how good our own brain is detecting at the objects. Now just tell me, what do you see? Right? There are two images. So take few seconds and tell me that what object do you see in the left image? Just start dropping your answers. I'm looking over the chat box. What objects do you see on the left side of this image? Here. Just tell me about this thing. Okay, I've got my first answer. Khalid says laptop, cup, etc. Okay. Ankita says left side laptop, mobile, cup, mouse. Okay. K says laptop, cup, saucer. Okay. Mouse, phone. Good observation. Arjun says animal. Left hand side में कौन सा animal है? Yogita says laptop. Okay. Sneha says a laptop placed on a table with a cup, mouse, and mobile placed on it. Good observation, Sneha. Yashvi says cup and saucer, electronic devices. Okay. Mobile cup, laptop, mobile cup, Arjun says okay. And many more are there. Sakshi, laptop cup, okay. Sandesh, laptop cup. Answer, sir. Mobile phone, mouse. Mouse is there, mobile phone is there, window frame. Okay, nice observation. Right. So everyone is letting me know about the different, we can say the objects, right? You are looking over the different objects and you are letting me dropping your answers according to that, well, right? So even when the image is noisy or we can say partially visible, our brain can still recognize the objects quickly, right? But imagine teaching a computer to do the same thing. How does a machine detect multiple objects inside a specific image, right? So let's try a demo for this thing. We have to look that whether it is working or not. Just scan the QR code and please let me know once you are done with that, with the done message in the chat box, so that we'll be on the same page, right? Okay, Fiza, I've got your answer. You are correct. Okay, Khalid says done, sir. What about rest? Okay, Anand says done, sir. Done for everyone.
Okay, Sandesh says done. Himanshu says done. Okay. Sakshi says done. Yashvi says done. Okay. Most of you have done with this one, right? So let's move ahead. Purnima says done, 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 done. Okay, done. Okay. Now just have a look. Let me open as well. Okay. So is it working for this time or not? Let's have a look. Is it working for you all? Yes or no? Is it working for you guys? So there's nope, it's not working. It's yes, sir, it is working. No, sir, it is not working. Yes, sir, it is working. Ankita is saying no, sir, it is not working. Dushra is saying yes, sir, it is working. Okay, it has worked for me as well. Just have a look over here, right? So let's suppose I'm having an image. Okay, let's have a look for this image only. Okay, I've taken this image, right? So now you can have a look that कैसे करा यहाँ पे दो मॉडल्स लिए YOLO 11 सेगमेंट राइट सेगमेंटेशन मॉडल्स है राइट अब देखो कॉन्फिडेंस लेवल इसका कितना है 0.5 है व्हाट ही हैज ऑब्जर्व्ड दैट दिस इज अ डॉग दिस इज अ बाइसिकल एंड दिस इज अ ट्रक तो यहाँ पे क्या करा है हमने बेसिकली व्हाट वी हैव डिड ओवर हियर दैट यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को इसने मार्क कर दिया है दैट दिस इज डॉग this is bicycle and this one is called to be your truck right mini truck whatever it is going to be right so accordingly it has managed the things अभी समझ में आया कि हाउ इट यूजुअली वर्क्स कैसे ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करा जाता है कैसे चीजें ये आइडेंटिफाई कर रहा है हैव यू हर्ड अबाउट द हैव यू नाउ डिड यू गॉट द पॉइंट्स फॉर दिस थिंग अभी देखा कैसे उसने ऑब्जेक्ट डिफाइन करा सो स्पेसिफिकली इवन दो मार्किंग करके करा कि दैट यस दिस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टू बी योर डॉग दिस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टू बी योर बाइसिकल एंड दिस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टू बी योर what that is called to be your truck right so accordingly it usually works in this thing right now let's move to our rest of the things that is so we'll move on next, right? That how usually the CNN works, right? So when you look at the picture, do you analyze that every pixel one by one? ऐसा तो नहीं है ना, right? We don't observe with we don't go with every single pixel. We usually recognize the image, right? So our brain usually notices the small patterns like edges, we can say the shapes or the colors. So CNN usually works in the similar way, right? So first the images enter into the network, but remembers that what we have learned earlier. The computer does not see the photos, right? So it remembers the representing pixels. Like हमने देखा था ना 8 कैसे बना रहा था वो on the pixels by 0 and 1, 0 and 1, right? ऐसे ही this after that CNN starts scanning the image using small filters. Think of these filters like tiny detectives, we can say. So they move across the images and try to detect the things like edges, corners, textures, right? And after that, it move with the pooling part, right? So now let me tell you something. Okay, what if you zoom out a photo? So still you can recognize the image what it is or not, right? So this is the question. Just drop your answers in the chat box. I will repeat the question once again. कि अगर आप किसी भी इमेज को जूम इन करते हो राइट जूम इन कर देते हो बहुत ज्यादा उसकी उसके पिक्सल्स फटने लग जाते हैं तो बट तब भी हम उसकी उस इमेज को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं राइट हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस ओके अंकित says yes Khalid says yes so traffic costly cameras capture people during the traffic is the same technology yes obviously yes yes right so we can recognize that these things right so it reduces the size of the image but keeps the important feature in that so that our model can learn faster right and the final step that is it extracts the features go through the classification layer while moving with the classification layer so that layer specifically decide that is it a dog is it a cat or is it a car
राइट। सो ऐसे करके वो पूरी की पूरी फाइनल प्रिडिक्शन हम हमारे सामने लेकर के आता है। और इसी को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजर। नाउ दिस वन, स्कैन दिस क्यूआर कोड। Scan everyone, be fast. Once done, please drop it done in the chat box. I'm looking over the chats. Okay. Fiza says done. What about rest? Where are you all? कहाँ रह गए सारे? जल्दी, be fast everyone. We are running out of time, right? Okay, done, 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 done. I've got lots of messages in that, right? Let me open that as well. Okay, this is going to be the CNN explainer, right? Now just have a look. For example, इफ आई हैव क्लिक्ड ऑन दिस ट्रक स्पेसिफिकली, ठीक है। तो आप देखो, जब ये फर्स्ट लेयर के अंदर गया, राइट, जब ये मेरा यहाँ पे ये फर्स्ट लेयर के अंदर जा रहा है, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के फर्स्ट लेयर के अंदर गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो। इट इज मूविंग विद दिस थिंग, कर्नल हमारा मूव कर रहा है और पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि ये इसको कैसे बस बना रहा है, राइट। क्या कर रहा है, ये हमारा कर्नल मूव कर रहा था, देखो इसने एक ये पैटर्न फाइंड आउट करा, ठीक है। अब ये पैटर्न जब फाइंड आउट हो गया, ठीक है, ये देखो ये जब पैटर्न फाइंड आउट हो गया तो ये हमारा एक्टिवेशन फंक्शन यूज करेगा, देखो। अब एक्टिवेशन फंक्शन क्या करेगा, इसमें से इंपॉर्टेंट फीचर्स को सेलेक्ट आउट करेगा। सी, वहां पे क्या हुआ, वहां पे हमारे फर्स्ट लेयर के अंदर फर्स्ट लेयर ने हमारे इंपॉर्टेंट हमारे जो था हमारा एक फीचर सेलेक्ट करा। अब उस फीचर में से जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो हमारा रीलो रेलो एक्टिवेशन फंक्शन हमारा उसको निकालेगा, राइट। अब यहाँ पे ये होने के बाद व्हाट रेस्ट ऑफ दीज विल बी डूइंग। अब देखो यहाँ पे ये सेम चीज सेम प्रोसेस हुआ, उसने दोबारा से फेच करा इमेज, अपना एक इंपॉर्टेंट वो निकाला, अपना कर्नल दोबारा से चलाया, कर्नल निकालने चलाने के बाद उसने दोबारा से हमारे पास कुछ फीचर्स कलेक्ट करे। अब उस फीचर्स में से रेलू ने उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स निकाले, राइट। अब ये मैक्स पोलिंग क्या करता है, अब मैक्स पोलिंग लगा हुआ है, ठीक है। मैक्स पोलिंग क्या करता है कि आपके जो भी आपका साइज होता है, ठीक है, उस साइज को कंप्रेस करते जाता है ये। लेट सपोज अभी आप यहाँ पे देखो, इनपुट कितने का था, 60 60 का था। आउटपुट कितने का आया, 30 30 का आया। ऑलमोस्ट हाफ कर दिया उसने उसका, राइट। सो ये उसको कंप्रेस करता जाता है इमेज को, ताकि कंप्रेस करने के बाद भी वो इजीली उसको पहचान सके कि दैट यस इट वाज अ ट्रक, राइट। अब ऐसे ही इसके अंदर गया मैक्स रेलू लगा, देन अगेन मैक्स पोलिंग आया। तो अब यहाँ पे मैक्स पोलिंग में देखो कि ऐसे ही कम होते होते यहाँ पे साइज कम होते होते कितना हो गया, 26 इनपुट आया और आउटपुट कितना निकला, 13 पिक्सल बाय 13 पिक्सल। सो इतना कम होने के बाद भी स्टिल इट इज रिकॉग्नाइजिंग दैट इट इज गोइंग टू बी योर, इट इज कॉल्ड टू बी योर स्कूल बस, राइट। अभी समझ में आया सबको कि सीएनएन कैसे वर्क करता है? इफ यस, प्लीज ड्रॉप योर मैसेजेस ओवर द चैट बॉक्स, आई एम लुकिंग फॉर दैट। Okay, I've got Fizza done. Yes, sir. Yashvi, yes, sir. Okay, okay, that's totally great. Sorry, right? अब ऐसे ही हमारी एक अनदर एक्टिविटी है दैट इज कॉल्ड टू बी आर हैंड गेस्चर रिकॉग्निशन, ठीक है। इसको स्कैन करो सब, एवरीवन प्लीज स्कैन दिस क्यूआर कोड so that we'll be on the same page again. Okay, scan the QR code, कर लिया सबने, डन 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 डन। Okay, done 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 done। Okay, now just have a look, let me open as well, I'll be moving to the same page। Okay, now just have a look. If I will be showing the palm, it's saying open palm. Just have a look. Closed fist. Just have a look over here, right? It's closed fist. Thumbs up, right? Thumbs up, thumbs down, right? Open palm, fingers, right? Pointing up, right? So accordingly it works.
तो अब जब ये हमारा वर्क कर रहा है, दैट इज योर दिस, कि हैंड रिकॉग्निशन भी हमारा सिमिलर वे में ही वर्क करता है। वो हमारे पैटर्न्स को ऑब्जर्व करता है कि हम कैसे अपने फिंगर्स को मूव अप कर रहे हैं, मूव डाउन कर रहे हैं, राइट, एंड अकॉर्डिंगली इट वर्क्स। नाउ जस्ट कम टू द अनदर विक्ट्री, अनदर एक्टिविटी दैट इज कॉल्ड टू बी योर फॉर द डिजिटल रिकॉग्निशन। आप देखो डिजिट्स को कैसे ये फाइंड आउट करता है। हमने देखा था ना कि वो अपने उसको लेता है, क्या बोलते हैं, पिक्सल्स के ऊपर प्लेस करता है वैल्यूज को। नाउ स्कैन दिस क्यूआर कोड, देन विल कम टू नो दैट हाउ एक्चुअली दैट यूजुअली स्कैन्स, और वो कैसे वर्क कर रहा है, वो उनमें भी कैसे रिलाई करवाता है। जस्ट वंस यू आर डन, प्लीज ड्रॉप डन इन द चैट बॉक्स। Okay, done, 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 done. Okay, done. Now just have a look. राइट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, राइट, कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर। लेट्स सपोज मैं आई विल बी सेलेक्टिंग टू, राइट, आई विल प्रोसेस। प्रोसेस करते ही नाउ जस्ट यू कैन हैव अ लुक ओवर हियर, आगे नहीं लग गया सारा चीजें। टू आया, टू टू 28 क्रॉस 28 का मैट्रिक्स बना, उसके अंदर इसने सारी जगह पे 1 1 1 1 प्लेस करा, 0 0 प्लेस करा। देन कॉन्वोकेशनल का फर्स्ट लेयर न्यूरल नेटवर्क आया, कॉन्वोकेशनल का फर्स्ट लेयर आया बेसिकली। अब उस लेयर के अंदर उसने उसने फाइंड आउट करा कि कैसे पैटर्न्स निकाले जाए, कि इसका शेप कैसे जा रहा है, एजेस कैसे हैं, कहाँ पे फ्लैट हो रहा है, कहाँ पे राउंड हो रहा है, राइट। अकॉर्डिंगली फिर उसने पूल यूज करा। पूल क्या करा उसने, पूल यूज क्यों करा, ताकि उसके इमेज को कंप्रेस कर सके। फिर इसने दोबारा से इस पे बनाया नए वाले पे, फिर उसको दोबारा से कंप्रेस करा, 5:5 करा। फिर उसने फ्लैटन न्यूरल नेटवर्क निकाले, ठीक है, कि उसने लास्ट में उसने निकाला कि फुल फाइनल पैटर्न कैसा दिखेगा, राइट। और उसको दिखाने के लिए टोटल उसको 84 न्यूरॉन्स लगे, राइट। समझ में आया कि कैसे हुआ। बेसिकली ऐसे धीरे धीरे ले जाकर के हाउ मेनी न्यूरॉन्स आर गोइंग टू बी कनेक्टेड फॉर मेकिंग वन डिजिट। ठीक है, अब वो न्यूरॉन्स की हेल्प से उसको फाइंड आउट कर रहा है कि अगर ये न्यूरॉन का स्टाइल है, इट मींस दैट इट इज गोइंग टू बी टू, राइट। सो अकॉर्डिंगली इट्स वर्किंग। लेट्स मूव अहेड। सो नाउ जस्ट हैव अ लुक टुवर्ड्स द स्टोरी। सो दिस इज गोइंग टू बी योर, इसको देख के क्या 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 पता चल रहा है आपको, दैट व्हाट यू आर गेटिंग टू नो अबाउट दिस थिंग, दैट हाउ how this is somewhere how Rahul, this is a thing scenario where Rahul is there, who is watching a horror movie, and he is scared after that watching that specific horror movie, and he was not able to sleep, right? So the question comes over here that Rahul क्यों नहीं सो पाया, because he was tired, or he was because he watched the horror movie, because of the horror movie. What do you say about this thing? Just drop your answers. Okay, because of the horror movie. B, 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 B. Okay. Yes, because of the horror movie, right? सेम ऐसे ही हमारा आरएनएन वर्क करता है, राइट। बाय remembering the past information, or by reading the information step by step, right, by remembering the previous words, or we can say the passes the information, and by remembering the previous words it passes the information forward, right. So in the same scenario RNN usually works। ठीक है, अब इसमें एक प्रॉब्लम आती थी, क्या प्रॉब्लम आती थी, कि जब बड़े स्केल पे हम इसको वर्क करते थे तो वो कुछ ना कुछ चीजें भूल जाता था, ठीक है। तो उसी उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए हमारे पास एक चीज आया, दैट इज कॉल्ड टू बी योर लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, इसके अंदर ये खुद से डिसाइड करता है दैट व्हाट टू रिमेंबर एंड व्हाट टू फॉरगेट। ये खुद से ही करता है कि ये इंपॉर्टेंट है इसको सेव कर लो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसको इग्नोर कर दो। तो दिस इज व्हाट एलएसटीएम यूज टू डू, राइट। फिर अब जिस जनरेशन पे और जिस टाइम पे अभी हम वर्क कर रहे हैं, दैट आर कॉल्ड टू बी आर ट्रांसफॉर्मर्स, राइट। सो लाइक ये जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं ना, ये बेसिकली यूज टू लुक एट एवरीथिंग एट अ सिंगल टाइम। ये सारे टास्क को एक ही साथ रन करते हैं ऑन अ सिंगल टाइम, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड टू बी, इट्स यूज्ड इन द लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ताकि पैरेलली ये सारी चीजों को एक एक साथ चला सके, राइट। नाउ व्हाई चूज विच मॉडल, तो सीएनएन किस लिए यूज होता है हमारा, इट इज बेस्ट फॉर द इमेज। RNN we can say, or the LSTM, it's used for, it is good for short sequences,
and usually it struggles with the long ones, right? And transformer handles long sequences efficiently with attention as well, right? So ये हमारे बड़े मॉडल्स के ऊपर जब भी हम लगाते हैं तो हम ट्रांसफॉर्मर्स का यूज करते हैं। शॉर्ट शॉर्ट सीक्वेंसेस के अगर ऊपर हमें यूज करना है तो वी यूज टू मूव विद द आरएनएन, और अगर हमें इमेजेस के साथ वर्क करना है देन वी यूज टू मूव विद द सीएनएन, राइट? नाउ जस्ट हैव अ लुक दैट एआई मॉडल शेपिंग आवर वर्ल्ड। तो ट्रांसफॉर्मर्स हमारे यूज होते हैं चैटबॉट्स वगैरह बनाने में। एलएसटीएम हमारा यूज होता है वॉइस असिस्टेंट्स बनाने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल सीरी एंड ऑल। और सीएनएन यूज होता है हमारे फोन्स के अंदर, जैसे फॉर अनलॉकिंग आवर फोन और समथिंग लाइक दैट, राइट? नाउ मूविंग विद दिस एनालॉजी, राइट? So just have a look that what we usually do over here, that is how we usually shape this, right? So हम इसको डीप लर्निंग क्यों बोलते थे? द वर्ड डीप यूजुअली कम्स अंडर द नंबर ऑफ लेयर्स इनसाइड द न्यूरल नेटवर्क, right? So in traditional machine learning we often had very few layers, but in deep learning we have multiple hidden layers between input and output, and each layers learns something new from the data. For example, the first layer may detect edges, second layer may detect shapes, third layer may detect objects. So accordingly it works, and it all becomes a hierarchy for this specific deep learning, right? Now, what makes what makes deep learning deep? Because of these multiple layers only, right? Now just move ahead. When we are going to use this deep learning, right? So we can use it in the image recognition, as we have already conveyed, audio processing, video analysis, network language, natural language by using your Siri, smartphones, whatever it is going to be, the chatbots, right? So in these also we can use this. Again, there are some applications of deep learning. We can move with the image classification, object detection, or we can say recommendation systems, autonomous vehicles, right? Speech recognition, NLP is being used, right? And next class we'll see that how NLP usually can be used for the rest of the things, right? So these are some essential tools. You can use TensorFlow, PyTorch, Keras for being, these are the most flexible frameworks, we can say, favored by the researchers for its intuitive design and dynamically computation of the graphs, right? For accelerating your experiment and prototyping as well. So these are that. So now just have a look that what's inside the AI brain looks alike. Just have a look, scan this QR code, everyone, and just drop your messages in the chat box once you are done with this. Okay, done, 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 done. Okay, now just have a look. So this is the TensorFlow playground. यहाँ से what you can basically do, आप यहाँ पे आकर के नॉर्मल अपना कोई भी यहाँ से डेटा सेलेक्ट कर लो, ठीक है? डेटा सेलेक्ट करो, आपने फीचर सेलेक्ट करो कि आपने कितने फीचर्स निकाल लिए। आप यहाँ से न्यूरॉन्स इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ से हिडन लेयर्स बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 4 5 हिडन लेयर्स 6 हिडन लेयर्स बना दी, ठीक है? और फिर ये आपको आउटपुट जनरेट करके देगा। तो अगर मैं इसको प्ले करूंगा, नाउ यू कैन हैव अ लुक कि मेरा ट्रेनिंग एरर कितना जा रहा है, 0.001, 0.000, ठीक है? कितने पॉक्स पे, यानी कि इसको जब मैं 500 मोर देन 500 अक्रॉस 500 टाइम्स इसको रन कर रहा हूँ, पॉक्स रन कर रहा हूँ, तो मेरा जो ट्रेनिंग लॉस आ रहा है दैट इज अराउंड 0। इट मीन्स कि दैट इट इज बेस्ट, राइट? अगर ये वन की तरफ जाता, अगर ये वन की तरफ जाता तो अगेन मैं इसको वेट्स को इंक्रीज करता यहाँ से, राइट? यहाँ से इन वेट्स को इंक्रीज करता और फिर दोबारा से इसको रन करता, राइट? सो अकॉर्डिंगली इट वर्क्स. So this was the TensorFlow, right? So it's quiz time basically, right? So scan your QR code so we can move ahead. So once you are done, please drop done in the chat box. Okay, done. What about rest? Are you done with that?
Okay, Ankita says done, done. Okay, Sundesh says done. Khalid says done, sir. What about rest? Done? Okay, okay. Now I have got the multiples. Himanshu, Shanu, yes. Purnima, that's totally great. Preeti, done. Okay, so comes to the conclusion that what we have learned today, we have learned that how deep learning is different from traditional machine learning, about artificial neural network, perceptrons, multi-layer, single-layer neural network, multi-layer neural network, what's the role of CNN, RNN, LSTM, transformers, right? And where we can use them, right? And how deep learning empowers real-world application, AI applications as well, right? So this was all from my side. Thank you everyone for joining the session. If you have any queries, you can drop your messages in the chat box. I'm looking for that, right? Okay. So if you have any question, you can ask me right now. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, Khaled. Thank you, sir. Amazing session. Thank you, Ankita. Deep. Thank you, sir. With lots of okay. When is the next class? Then it is going to be around on 13th. 13th. Yeah, Friday. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. 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 So done everyone. Thank you for joining. Have a nice day and bye bye.